In the last class, I was talking about cloning, right? So we'll talk about one more issue. We don't have. So cloning is done. Any question related to cloning? And if we have done with cloning, then we'll go with another topic, that is surrogacy, right? So today we are going to complete 2-3 topics, small one. One is surrogacy, another is mitochondrial spindle transfer or mitochondrial therapy. So surrogacy used to be a very important topic, but now because we have one act on surrogacy now. So in 2021, India enacted an act that is called Surrogacy Regulation Act 2021. And after that, surrogacy is very controlled and commercial surrogacy in India is banned, right? So we'll just look into the entire scenario, that what happened all through the year. So let's talk about a topic called surrogacy. So just some outline of the topic that we need to understand. So surrogacy is a kind of ART, right? If we talk about surrogacy, then surrogacy will fall under something called ART. ART is assisted reproductive technology. Reproductive technology. So assisted reproductive technology, that is what surrogacy is. Like the most common ART that we have is IVF. So IVF is the most common ART technology that we have around us. Surrogacy is even higher, right? So this all ART, surrogacy, this all will come under one bracket, that is called assisted reproductive technology. This technology is meant for those couple who are not able to conceive by natural means. So if there is a couple who are not able to conceive by natural means, then for them assisted reproductive technology is there, ART is there, IVF is there, surrogacy is there, right? Now, surrogacy can be of two types. So if we talk about types, then this surrogacy can be of two types. I assume that everybody know what is surrogacy. That is that a female will provide her own womb for the growth and development of an embryo, right? So that is surrogacy. We talked about surrogacy when we were talking about cloning, right? So let's not get into the definition and all, we know it. But surrogacy can be of two types. One is called traditional surrogacy. And then there is another one that is called commercial surrogacy. Or let's say not commercial, gestational surrogacy. Gestational surrogacy. The difference between both, I'll tell you, that when it is traditional surrogacy, it is something where the female is going to provide both womb and ovum, right? So there is a couple, male and female, and male is healthy, female is not able to conceive. So female is having some reproductive problem and she is not able to conceive in her own body. So the couple can go for the help of a third female, and that is called surrogacy, right? But the second female, the surrogate mother. Surrogate mother can have two roles. One is traditional surrogacy. In this surrogacy, surrogate mother will provide two things: egg plus womb. That means womb is there, but egg will also be used.
This is controversial. That is a lot of ethical issue and it is banned. है ना? Because egg and womb दोनों क्यों? Egg का मतलब क्या हुआ? Genetics will come from the surrogate mother. It will create unnecessary problem. So ethically, legally, morally, traditional surrogacy is banned. Although we have some example of it, अब रियल लाइफ में तो नहीं है, मूवीज में है. जैसे एक मूवी थी बहुत पुरानी, चोरी चोरी चुपके चुपके, है ना? तो आई डोंट नो, मतलब मैंने भी कहीं पढ़ा, देखा नहीं मूवी, मैं मूवी देखता नहीं, बट उसमें ऐसा ही था कि couple is not able to get the baby, so the husband go to the other woman and then the baby is born out of the other woman, right? तो उसमें the mother is not having any genetics. Genetic contribution of mother is not there. Genetic contribution of father and surrogate mother is there, right? So that is banned. It's not valid. So we can simply write it's banned. Even by rule also it is banned. But obviously it is there, one of the way. The another one is gestational surrogacy, in which surrogate mother will provide only womb. And obviously only womb means not egg. Egg will never be used. By law also it cannot be used, right? So even by law, a surrogate mother can never ever offer the egg. The condition may be there that female, the couple's female, the wife is not able to hold pregnancy because there is a problem in the womb, and it may be possible that problem is so much that female is not having the egg also. So in that condition, you can take egg from anonymous donor, but not from the surrogate. Surrogate से egg नहीं ले सकते. That is by rule. You cannot take that. So fertility clinics are there. They arrange egg. If the female is not able to produce her own egg, no problem. There are female who donate their egg, and donors are always anonymous. So anonymous donors' egg will be utilized, but not surrogate mother's egg, because the moment you use surrogate mother egg, it will become traditional, which is banned because of obvious reason. Genetics is coming from the known female. The female will be knowing that my genetics is there. It might create a lot of complexity, problem, psychological, emotional connection. So for that it has been prohibited. So gestational is what? Which is allowed. But again, in gestational also, we have two types of surrogacy. So gestational also, now it is two types. So it's the basic concept. Now let's come to another one. So gestational surrogacy. Gestational surrogacy. And then it can be of two types once again. One is called commercial surrogacy. Commercial surrogacy, right? And yet another could be altruistic surrogacy. Altruistic surrogacy, right? So gestational means only womb, no ovum. But then it can be of two types. One is commercial, when a female will agree in the lieu of some payment. So the female will agree to give the gestational surrogacy service. In the crude language, she will rent out her womb for money, right? And it has been there. So in India, commercial surrogacy started in India 2002 to 2015. It was available, right? It was available freely, right? Who allowed it? So ICMR allowed it. So in India, 2002 to 2015, available under guidelines of ICMR. So ICMR in 2002 came up with the guidelines, and any fertility clinic who is basically accepting these guidelines can go for commercial surrogacy. And from here in India, commercial surrogacy started, and India become global hub of commercial surrogacy in next 6 to 8 years. So by 2018,
9-10, India was global hub of commercial surrogacy, right? And the huge market we have created of some commercial surrogacy. Around that time, it was said that India has got a lot of medical tourism money is coming in. So medical tourism money was coming in India, but a big chunk of medical tourism was coming from surrogacy service. So $500 million, that much market we have created for the surrogacy by 2009 and 10. But obviously, lots of money is coming. So when the money is there, lots of irregularity will occur. And the biggest problem was that there was exploitation of Indian women in surrogacy, right? And that is why in 2015 it was banned due to the interference of Supreme Court. Lots of cases were there in a Supreme Court, and Supreme Court suggested that India should make a proper law for it. And if the law is not there, then immediately it should be banned. So 2015 government took a call, ban was there. बस ऐसा नहीं था कि 2015 के बाद surrogacy हुआ नहीं, बैन कर दिया. मतलब it was not freely available, but obviously if you want to get this, then you have to apply, and then your application is accepted and you can go for surrogacy. But freely available was not there, right? But when it was freely available, it created a lot of problem. The problem number one, exploitation of the female of India. And the female was forcibly put into the surrogacy by the men of the family, है ना? तो आप ऐसे भी बहुत कुछ पढ़ते हैं यूपीएससी में, women empowerment and exploitation of women, that start from the house only, right? So the male and female of the house, they are the first exploiter of the female. और ऐसा नहीं कि मेल ही करता है, फीमेल, है ना? फीमेल भी एक्सप्लॉइट करती है दूसरी फीमेल का. सास वो छोड़ दो, है ना? तो अब ये मीम का मामला आ जाता है ना फिर बाद में. अभी मैं जा रहा था तो किसी ने मुझे भेज दिया कि 1990s में जब डॉटर इन लॉज आती थी तो शी यूज्ड टू बी स्केयर्ड कि सास कैसी मिलेगी, और अभी सास जो है वो स्केयर्ड है कि बहू कैसी मिलेगी. तो कुल मिला के 90 वाली ही स्केयर्ड है ना, पहले बहू की तरह अभी सास की तरह. उसकी लाइफ खराब हो गई पूरी. खैर, सॉरी, $500 million. Anyway, so this was huge market, and that this market was such huge that obviously we had a lot of willpower. We need to have a lot of willpower to stop it, but करना तो था ही, because it came to the female dignity, है ना? तो what happened that female who is giving this surrogacy services, they basically, majority of them, 90% of them belonging to the lower state of society, low income group, unemployment, uneducated, unaware, है ना? तो वो vulnerable group हो गई. And the male of the family and the other female of the family, they will motivate female कि go for surrogacy, because in 1 year we are going to get 5 to 7 lakh rupees. 5 to 7 lakh rupees in a 1 year is a good sum of money for that income group. So the female was emotionally manipulated, forcibly put into the surrogacy in many cases, and then one after other, many surrogacy was done in a single female. तो ये भी नहीं कि एक, many. Money technically should be going in the hand of the female, but because of the patriarchal society, female is only signatory. The money was going into the, male of the family. तो वो money वो use कर लिया, consume कर लिया. By the time female came back from surrogacy, so money is gone, because female will not give surrogacy services by living in the house. She has to live somewhere in a hostel, because society will never look at surrogacy from point of view of respect. वो तो देखेगी नहीं. So exploitation, human trafficking, a lot of things started. Secondly, the female who were giving surrogacy, 90% of them was uneducated, unaware. On a contract is written that it's a surrogacy service, you have to provide the womb service, and after the birth, baby need to be delivered to the couple. But in many cases, female run away with the baby. क्योंकि you connect with the baby. And connection is basically hormonal. So when the mother is having a baby in the mother womb, and when the baby is born, there is a strong hormonal connection. Oxytocin work in mother. And due to that, obviously the female will connect with the baby, unless she is very hard-willed woman. So many female who are surrogate, वो हॉस्टल से या हॉस्पिटल से बच्चा लेके भाग गई,
अब सोचो उनके ऊपर केस क्या लगा, किडनैपिंग का, बिकॉज टेक्निकली बेबी बिलोंग टू द कपल, और ओबियसली बात है भागोगे कहां पे इंडिया में। सो पकड़ा गया, पकड़ने के बाद कोर्ट में, एंड व्हेन द मोमेंट यू पुट इन द कोर्ट एंड मीडिया, यू नो दैट इंडियन मीडिया, तो व्हाट हैपेंस, दैट फीमेल नेम, फोटोग्राफ, एड्रेस, इट ऑल केम आउट। सो दैट इज ब्रीच ऑफ प्राइवेसी एंड डिग्निटी। प्राइवेसी इसलिए कि प्राइवेसी तो मेंटेन करना था, और डिग्निटी इसलिए कि सोसाइटी विल नेवर लुक एट सरोगेसी फ्रॉम द रिस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। चलो इंडियन कोर्ट बाय दैट टाइम when these things started coming in, like in 2009-10, Indian court was a kind of, already acquired a human face. मतलब वो अंग्रेजों वाला colonial impact कोर्ट से धीरे धीरे जा रहा था। तो उसमें ये किया गया कि चलो ठीक है यार, it's a kidnapping but it is out of emotional compulsion, तो let's give punishment of only 3 months or 6 months और करके छोड़ देते हैं। ये नहीं कि 4 साल के लिए, 7 साल के लिए अंदर, ऐसा कुछ नहीं किया, बट स्टिल डिग्निटी का लॉस तो हुआ ही ना। There were many cases where the couple who is coming from the other country, they will take advantage of Indian surrogacy scenario, because in India there was no law related to surrogacy, and if there is no law related to surrogacy, then there is no safeguard to surrogate mother. If surrogate mother has gone through any kind of miscarriage, no money is given. Miscarriage is a very bad thing that can happen to any female. It may be life threatening also. It may cause some problem that can persist throughout the life and for many years. तो एक तो miscarriage, and miscarriage is, it can happen to any female. It happen in normal family also, like in a normal pregnancy as well. But there is no provision that if the female is going through miscarriage, then who will bear the cost of the treatment, whether she will get some money or not. So let's say after 3 months, 4 months, 5 months miscarriage happened, then female was treated, at the superficial level, and she was sent back, ab jao ghar. She has to deal with that miscarriage and all the things that happened due to it, because there was no law. Law नहीं है तो बढ़िया है, आप सीधा निकल सकते हो। Foreign couple, they preferred India because in India there is no law. Law नहीं है तो फिर क्या है, फिर तो पूरा मामला ही उनके फेवर में है। Because if law is there, you have to abide by these rules and regulation. No law, that you can simply take your baby, go back. And many cases came that was very, very controversial. Like you might have seen the movie Mimi. So Mimi is based on real story, but because Mimi is a movie, so they have taken some liberty, creative liberty. So Mimi की story बिल्कुल clear है कि इटली का एक couple था, वो इंडिया आया, surrogacy की services लिया, and then the couple went back to Italy, and then the couple was given the news that the baby inside the mother womb is twin baby, जुड़वे बच्चे। Italy couple was very happy कि चलो जुड़वे बच्चे, paid for one and I'm going to get 2. लेकिन क्लिनिक ने भी कुछ बातें छुपा ली होंगी। सो व्हेन दिस कपल केम टू टेक डिलीवरी ऑफ द बेबी, सो वन बेबी वाज हेल्दी, अनदर वाज डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम का मतलब फिजिकल मेंटल इश्यूज थ्रू आउट द लाइफ, नो करेक्शन, नथिंग कैन बी डन। सो नाउ दिस इटली कपल इज सेइंग दैट आई वोंट टेक द बेबी हु इज सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम, आई विल टेक द ओनली हेल्दी वन बिकॉज आई हैव ऑर्डर्ड फॉर वन ओनली। तो ये तो कोई समोसा तो है नहीं, एक ही ऑर्डर दिया तय कि लेंगे, खराब वाला हम नहीं लेंगे, है ना। आई मीन इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोजेनी, राइट। अब क्या हुआ कि इटली कपल एंड दिस फर्टिलिटी क्लिनिक एंड सरोगेट मदर, दे ऑल 3 आर एंटेंगल्ड इनटू दिस केस। केस वेंट अप टू सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सरोगेट मदर की प्राइवेसी डिग्निटी फिर ब्रीच हुई, बिकॉज शी हैज टू गो टू द कोर्ट टू टेस्टिफाई थिंग्स। पीपल वुड बी आस्किंग कहां जा रहे हो, नहीं जा रहे हो। मीडिया इज सो, आई मीन मेनी टाइम मीडिया बिकम सो सेंसलेस की फोटो खींच लेते हैं लोग, नाम बता देते हैं। एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट से दैट नो, यू हैव टू टेक दैट बेबी, बोथ ऑफ देम यू हैव टू टेक इट टू द इटली। बट सोच के देखो, जो उसी समय उसको डिनाई कर रहा था, इटली ले जाके क्या किया होगा, दैट इज अनदर क्वेश्चन, है कि नहीं। Obviously because the baby was not born out of that Italian couple's body, तो connectivity तो था ही नहीं, it was just for the good, I mean healthy baby. So that is another problem. There is yet another problem, that baby was born, couple is saying that I'll take just one, I'll leave the other one. अब दोनों बेबी जब तक केस चला तब तक कहां का सिटीजन है, न इंडिया का है न इटली का है, आप समझ रहे हो। So a very fundamental thing was not being decided. That is another problem. Supreme Court took a stand on that.
कि ऐसे कैसे हो सकता है कि द बेबी इज बोर्न इन दिस वर्ल्ड एंड शी इज नॉट हैविंग एनी सिटीजनशिप, जबकि वो आप जानते हो ना कि हर जगह के अलग अलग रूल्स है। एरोप्लेन में बेबी हो जाती है उसको सिटीजनशिप मिलता है। हवा से अगर एरोप्लेन में अगर आप नो वंस लैंड पे जा रहे हो या फिर आप इंटरनेशनल वाटर पे जा रहे हो तो ओरिजिन के हिसाब से मिल जाएगा। लैंडिंग हो गई तो फिर उस कंट्री के हिसाब से मिल जाएगा, बट यू हैव टू गिव इट, इट्स वन ऑफ द फंडामेंटल थिंग टू प्रोवाइड। सो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसमें एक वर्डिक्ट दिया 2010 में, दैट बेबी बोर्न इन इंडिया बाय सरोगेसी विल इमीडिएटली बी गिवन इंडियन सिटीजनशिप एंड देन द कपल विल चेंज इट टू द देयर कंट्री सो दैट बेबी हैव द फंडामेंटल राइट्स बाय द टाइम ऑफ बर्थ ऑल्सो। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। There was one very famous case of baby Manji, and baby Manji she is Japanese. I mean, Japan couple came to India, और वो इंडिया के surrogacy कराए, and after surrogacy was established, the couple traveled back to Japan. In Japan, this couple they had a very big fight. Fight is a very common thing, लेकिन थोड़ा बड़ा fight था, and the fight was so big that wife filed divorce in Japanese court. इधर surrogacy चल रहा है, उधर कोर्ट में डिवोर्स का केस चल रहा है, एंड वाइफ हैज गॉट सम सॉलिड एविडेंस अगेंस्ट हस्बैंड, ऑन दैट बेसिस कोर्ट अवार्डेड डिवोर्स। मतलब अनलॉक मोबाइल फोन हाथ में लग गया होगा तो तो मामला ऐसा था कि मिल ही गया, कोर्ट ने कहा कि ओके फाइन, डिवोर्स इज गारंटीड, डन। अब सोचो, divorce guaranteed, baby is here, and Japanese government and court has no clue. Even couple hid the fact that divorce is going on. And the female, I mean, she got the divorce and she moved on. वो अपने लाइफ में चलो आगे चली गई। Now this husband, ex-husband basically, तो वो आया इंडिया में कि लाओ बेबी को मुझे दे दो। The girl child was there, but fertility clinic denied it. How can I hand over the baby to you? Because you came as a couple, right? अगर कल के वाइफ आके बोलेगी तुम्हें कहां से, I mean, how can I justify it? So you come with wife, ex wife है तब भी आ जाओ, साइन करो, लेके जाओ। That person went back to Japan, asked the ex wife that please come, she denied. फिर आया, बोला कि उसने मना कर दिया, बोला फिर काम करो एनओसी लेके आओ। Went back to Japan, एनओसी लेके आया, एंड आफ्टर एनओसी वाज सबमिटेड। अब फर्टिलिटी क्लिनिक ने कहा कि ठीक है एनओसी तो मिल गया, लेट मी टॉक टू द लॉयर। लॉयर ने कहा कि दे ही नहीं सकते। डिवोर्स केस में इंडिया में रूल है कि बच्चे का अगर एज 5 साल से नीचे है, कस्टडी विल ऑटोमेटिकली गो टू व्हाट, मदर। तो ये कैसे लेके जा सकता है? बिकॉज इंडिया पे तो इंडिया का रूल लगेगा ना। अब ये वापस गया, फिर बोला कि चलो, बोला कि नहीं मैं तो मूव ऑन कर चुकी हूं। Why would I come? Your baby, you take care, right? Then जापान का कोई लॉयर होगा, उसने समझाया इसको कि go and ask the authority कि अडॉप्ट कर लेता हूं, अपने ही बच्चे को अडॉप्ट कर लेते। He came back India, he came up with the adaptation thing, तो लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर इंडियन लॉ कहता है कि अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसको कोई मेल फॉरेनर अडॉप्ट नहीं कर सकता। अब वो गर्ल चाइल्ड है, वो मेल फॉरेनर है, अडॉप्शन नहीं हो सकता। तो सोचो 4-5 बार इधर उधर हुआ। तो फाइनली फ्रस्ट्रेटेड मैन, आई मीन, एक तो डिवोर्स, ऊपर से बेटी वो भी नहीं। देन ही मेट इंडियन लॉयर, दिस टाइम ही वाज एट द राइट प्लेस। इंडियन लॉयर ने कहा कि व्हाट डू यू वांट? कहा कि कुछ नहीं, आई जस्ट वांट दिस बेबी एट माई होम। बोला हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अभी कहां तक घूम रहे थे? बोला कि अभी तो जापान के लोग। बोला क्या बात करते हो, यू शुड कम हियर, 30,000 ही में आते तुम। तो बोला कि व्हाट इज द वे आउट? बोला कि यू कैन नॉट अडॉप्ट, राइट? यू ब्रिंग योर मम्मा, योर मम्मा कैन अडॉप्ट। दादी तो अडॉप्ट कर सकती है, तो बच्ची को घर में ले जाना है ना, ले जाओ। यू कैन नॉट अडॉप्ट बट योर मदर कैन अडॉप्ट। तो मदर को लेके आया, अडॉप्टेशन हुआ, लेके गया, है कि नहीं? लेकिन सोचो फॉर ऑल दिस 6 months and 1 year दिस लीगल हैजल परसिस्टेड। बेबी को पता नहीं कि कहां का सिटीजनशिप है,
surrogate mother is engaged into that, and the husband, वो भी इसी में engage है. So that is how many cases that reached to the Supreme Court, and Supreme Court had to take decision. अब Supreme Court के लिए भी तो ये सब नई नई बातें थी ना, because इसका कोई precedence तो है नहीं. Every time it's a new, so पहले एक बेंच बैठेगा जज का, फिर वो सब डिसाइड करेंगे, and then it will set कि अब ऐसे होगा, अब ऐसे होगा. हर बार सुप्रीम कोर्ट एक रूल सेट करेगी. So Supreme Court also got frustrated, and in 2015 they said that now enough is enough. Either you make rule, law in parliament, or you ban it. Then government took it in a positive way. Government ने कहा कि no, we can compromise with anything else, but we cannot compromise with dignity of Indian women who is offering the surrogacy services. And then it was banned in 2015, है ना. अब वो जापान का जो हस्बैंड था, उसके बारे में सोच के अभी भी बुरा लगता है, क्योंकि वो आया था डॉटर को लेने, लेकिन सिस्टर लेके गया ना फाइनली. टेक्निकली शी इज व्हाट, सिस्टर. तो कोई बात नहीं, चलो. देन आफ्टर 2015 ओनली दिस सरोगेसी एक्ट एंड बिल, आई मीन बिल शुरू में रहा होगा. So surrogacy bill was, it was draft and then bill and then act. Finally, in 2021, we cleared this Surrogacy Regulation Act. In Surrogacy Regulation Act, what happened? That this was banned. ये totally ban कर दिया गया. So what happened in surrogacy, gestational surrogacy? In between, what came? That is called Indian Surrogacy Regulation Act 2021. So this is something which came, and finally this was banned, and this is the only thing which is allowed. So this is altogether banned now. 2015 तक तो फिर भी नॉर्मल बैन था, अब पूरी तरीके से बैन. I mean in India, not even Indian couple, not foreigner couple, no couple can get commercial surrogacy from any other female by paying some money. So what is the left? I mean, what is the option which are left? Altruistic one. Altruistic का मतलब हुआ कि now the female can give surrogacy services just to help the couple without any money transaction. Altruism का मतलब होता है उपकार करना, परोपकार, उपकार, kind of help, sacrifice you can say like. So on that basis the female can do. है ना. The altruistic means that you do it out of help, that you want to help a couple who is not able to conceive, and a female agreed to help by keeping the baby in her own womb, but she won't charge any money. है ना. अब इसमें कैच ये है कि not any female can offer it, क्योंकि any female can offer इसका मतलब फिर क्या होगा, फिर तो कमर्शियल हो जाएगा वो. मनी इज नॉट द, आई मीन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, फिर हम अकाउंट में पैसे नहीं डालेंगे. देयर इज अनदर वे टू पे, ज्वेलरी, लैंड, some kind of other benefits that we can provide. So there is a clause that altruistic surrogacy can only be provided by close relative. Close relative of couple. So who can provide? Close relative couple. तो अब इसमें क्या हुआ? No money transaction, no money involved. So no money involved, and it is only by close relative. So close relative means what? All the blood relatives are close relative, right? So blood relative and close relative, there is a little difference. Close relative means, if I look at my scenario, so my close relative is my mother. If she is in that age, she can give surrogacy service. My sister, she is my close relative, blood relative. तो यही दो हुए, बाकी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा एस्टैब्लिश करना, right? But when we say close relative, so a little bit more options will be there. Like my brother's wife. So my brother's wife, जिसको भाभी कहते हैं आप, वो blood relative नहीं है, but she is close relative. और my wife's brother's wife, है ना, वो भी, because couple तो दोनों तरफ से हो सकता है. So ambit was a little bit broadened. But अब बात समझ ही सकते हो आप. In Indian society, who will agree? मतलब ही नहीं बनता. So in India, surrogacy is almost came down to 1%. जो 100% surrogacy को मान के चले, it has came down to 1%. Because obviously, I mean, Indian society will not be accepting this, that in a family member like mother and sister or
sister-in-law, she is providing surrogacy services to a couple. So chances are very less now. That is why surrogacy is already wiped out. इसमें क्या है? Altruistic is no money, only by close relative. This is banned and this is allowed due under the Indian Surrogacy Regulation Act. अब इसमें दो चीजें, that who can take surrogacy service and who can receive surrogacy service. I mean, who can take surrogacy services and who can provide it, right? तो इसमें दो बातें, चलो देखते हैं. So under this provision, surrogate mother कौन हो सकती है? तो फर्स्ट, क्लोज रिलेटिव ऑफ कपल, दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड, एज ग्रुप होना चाहिए 25 to 35 year old. So more than 35 she won't be, वो नहीं दे सकते फिर, right? Third thing, she must be married and mother of at least one child. So she must be married and mother of at least one child. ये होना चाहिए, है ना? Next, she must be physically and mentally fit. तो उसके लिए प्रॉपर एग्जामिनेशन होगा, मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, साइकोलॉजिकल टेस्ट, काउंसलिंग, सब कुछ होगा, राइट? एंड हर एग विल नेवर बी यूज्ड. हर एग और हस्बैंड्स sperm cannot be used. So हर एग, उसकी एग नहीं यूज करेंगे और उसके हस्बैंड का स्पर्म नहीं यूज करेंगे. डोनर हमेशा एनोनिमस होना चाहिए. You get my point? Sometimes it may be possible that couple is having problem at the both end. I mean, husband is also not having proper fertile sperm. In that case, couple can go for donor, right? But this lady's husband can never be the donor. तो वो लेडी कभी एग डोनर नहीं हो सकती because she is already giving surrogacy service, and she can never be, I mean, his husband can never be a sperm donor. So these are the eligibility criteria of surrogate mother. And one thing is there, no money involved, है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? No financial transaction, no money. मनी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ मेडिकल खर्चे वर्चे तो देने पड़ेंगे, राइट? सो मेडिसिन, डॉक्टर्स फीस, I mean delivery fee and all medical expenses that will be borne by couple only, right? So this is what the surrogate mother should be. But at the same time, commissioning couple कैसा होना चाहिए? So couple who is going to take this surrogacy, तो उसमें देखो only heterosexual Indian couple, Indian married couple. So every word is important. So only heterosexual Indian married couple. Foreigner not allowed. Homosexual couple not allowed. Live-in couple not allowed. तो only heterosexual married Indian couple, right? अब इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है. कोई फॉरेन कपल आएगा नहीं है. होमोसेक्सुअल कपल नहीं है. ऐसे भी होमोसेक्सुअलिटी में मैरिज अलाउड तभी है नहीं. होमोसेक्सुअलिटी इज डीक्रिमिनलाइज्ड बट मैरिज इज नॉट येट अलाउड. तो जो लोग मैरिज कर लेते हैं, आपने सुना होगा होमोसेक्सुअल मैरिजेस आर गोइंग ऑन बट दे नेवर गेट द मैरिज सर्टिफिकेट. लीगल उसका स्टेटस कुछ भी नहीं है, तो ऐसे ही आउट हो गए, राइट? लिव इन कपल, लिव इन इज ऑल्सो अलाउड, इट्स अ लीगल थिंग, बट लिव इन कपल कैन नॉट गो फॉर सरोगेसी. वो सरोगेसी के लिए नहीं जा सकते, राइट? अब इसमें क्या है? द मेल एंड फीमेल एज. तो मेल और फीमेल का एज. अच्छा, इसमें क्या है? मैरिज के बाद 5 years ऑफ वेटिंग पीरियड आफ्टर मैरिज.
So couple after marriage they have to wait for 5 years to get it done, है ना. 5 years का मतलब यह है कि in those 5 years the couple will go for the all medical treatment, possible treatment. If something can happen then it's all fine. After 5 years they can go for a test, जहां पे डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है CMO, वो एक सर्टिफिकेट बना के देंगे कि दिस कपल इज इनफर्टाइल, नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन किड, सो दे मे गो फॉर सरोगेसी, राइट. एज रेंज कितना होना चाहिए? तो मेल का एज रेंज होना चाहिए 26 to 55 and female should be 23 to 50 years. So in that age range. क्योंकि इसमें कैलकुलेशन सिंपल है. 21 में शादी होगी मिनिमम एज, और 5 ईयर वेटिंग, तो 26 या 18 में शादी. हालांकि 21 हो गया, 25 नहीं हुआ अभी भी 18 ही चल रहा है. तो 18 + 5 दैट इज 23. तो वो उस तरीके से, राइट. Single female, single male are not allowed, but in one condition single female is allowed. If the female is divorcee or widow, she can go for surrogacy, है ना. तो you can write one more point. Divorcee or widow female can go for surrogacy. Divorcee or widow female can go for surrogacy, है ना. तो डिवोर्सी और विडो टेक्निकली सिंगल फीमेल, बट सिंगल फीमेल एज अ कैटेगरी शी मस्ट बी ईदर डिवोर्सी और विडो. सिंगल मेल ऑफ एनी सॉर्ट इज नॉट अलाउड. मेल कोई भी सिंगल अलाउड नहीं है. इसके लिए मेल अलग से लड़ रहे हैं, है ना. एक पुरुष मुक्ति मोर्चा भी है भारत में, है ना, जो ऐसे पुरुषों की पूरी ग्रुप है जो सताए हुए हैं, और है प्रॉपर है. आई मीन दे हैव फेसबुक पेज एंड ऑल. आई एम नॉट द मेंबर, डोंट वरी, राइट. बट वो है, एंड समवेयर इन इंदौर और भोपाल दैट हेडक्वार्टर इज देयर, है ना. और वो दे आर फाइटिंग दिस कि व्हाई सिंगल मेल इज नॉट अलाउड. बेसिक रीजन है. फीमेल सिंगल अलाउड है क्योंकि अभी पढ़ा ना कि अगर डिवोर्स हो तो बेबी का कस्टडी मदर के पास जाएगा. इफ यू अलाउ सिंगल मेल तो फिर तो आई मीन यू आर कॉन्ट्राडिक्टिंग योर ओन लॉ. तो फिर इसके बेसिस पे तो वहां पे भी डिवोर्स केस में भी वो लोग कहने लगेंगे कि व्हाई कांट आई गेट कस्टडी इफ यू कैन गिव सरोगेसी सर्विसेज टू सिंगल मेल. सो सिंगल आई मीन डिवोर्सी मेल कैन ऑल्सो क्लेम द बेबीज कस्टडी बिफोर 5 ईयर ऑल्सो. तो वो आप ध्यान रखिएगा. सो दैट इज व्हाट द थिंग इज दैट. तो ये हो गया सरोगेट मदर कपल, राइट. वो आपको सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे. You have to provide certificate. I mean to regulate all the thing. अब ये क्या है ना कि it's not like it's a rule. So now Surrogacy Regulation Board is established in all states. तो सारे states में Surrogacy Regulation Board है. So let's say if a couple is willing to go for surrogacy, then couple along with all the certificate, along with the surrogate mother, she is close relative, and proof of the relation, for everything they have to go to the Surrogacy Regulation Board. उस बोर्ड में सब कुछ सबमिट करिए, अप्लाई कीजिए. देन योर एप्लीकेशन विल बी वेरीफाइड. देन यू विल कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, फॉर द काउंसलिंग. वंस एवरीथिंग इज डन, देन सरोगेट मदर को बुलाया जाएगा, उसके हस्बैंड को बुलाया जाएगा. फिर उन लोगों की काउंसलिंग होगी, वेदर यू वांट टू डू इट और नॉट, एनी प्रेशर इज देयर और नॉट. एंड देन अकेले में फीमेल की काउंसलिंग होगी, सरोगेट फीमेल की. एवरीथिंग इज ओके, देन ओनली इट विल बी अलाउड. तो मतलब स्कोप ही नहीं बचा. यू गेट माय पॉइंट? हाँ जी. इसमें सरोगेट इसमें तो जाहिर सी बात है कि अगर पहले से एक भी बच्चा है तब तो आप सरोगेसी ले ही नहीं सकते. बट देयर इज वन कंडीशन. इफ द एग्जिस्टिंग किड इज मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल एंड डॉक्टर कह रहे हैं कि वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता, तो इन दैट कंडीशन द कपल कैन गो फॉर सरोगेसी. यू गेट माय पॉइंट? बट इफ द कपल इज हैविंग एनी चाइल्ड, एडॉप्टेड चाइल्ड हो या उनका खुद का बच्चा हो, हेल्दी हो, नॉर्मल हो, तो वो सरोगेसी सेकंड बच्चे के लिए नहीं ले सकते इन दैट रूल. यानी कि जितने लोगों ने ये सरोगेसी की सर्विसेज ली है
आई मीन सेकेंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड के लिए, दैट ऑल हैज बिकम इलीगल नाउ. बी इट शाहरुख खान और आमिर खान, ये सब ने सरोगेसी का एक तरीके से मिसयूज किया. सुषमा स्वराज was I mean there around that time, she was alive and she presented this ड्राफ्ट को कैबिनेट कमेटी के सामने रखना पड़ता है पहले. यू हैव टू डिस्कस इट इन अ कैबिनेट. एंड व्हाइल शी वाज प्रेजेंटिंग इट टू द कैबिनेट कमिटी, शी कैटेगरिकली टुक नेम ऑफ दीज पीपल, शाहरुख खान, आमिर खान, करण जौहर, तुषार कपूर, इन सब के नाम लिए कि दीज पीपल दे आर मिलियंस ऑफ फॉलोअर इन इंडिया एंड दे आर सेटिंग रॉन्ग आई मीन एग्जाम्पल्स. क्योंकि इतने पैसे तो बहुत लोगों के पास है ना फिर. एंड वाई दीज पीपल आर बेसिकली गोइंग फॉर सरोगेसी, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि दे नो दैट प्रेगनेंसी इज टैक्सिंग ऑन द ह्यूमन बॉडी. Pregnancy is not, I mean, obviously, pregnancy is something else. Pregnancy is all about sacrifice, right? If you look at unbiased, if you look, then female has to sacrifice a lot of time, lot of health, lot of opportunity just to have a baby. है कि नहीं? आप अगर थोड़ा आगे जाओगे तो you will realize it. I have many students who are there in IPS, IAS and IFS. अभी एक IFS एक स्टूडेंट है, उनसे बात हो रही थी. And she used to get only, I mean, city में सर्विसेज मिलती है उनको. तो मैंने कहा कि why don't you get, I mean, good नेशनल पार्क में जाओ. वो इसलिए मैं कह रहा था कि कुछ मेरा भी फायदा होगा, है ना. तो she was like कि सर हमें नेशनल पार्क में कोई जाने नहीं देता. बिकॉज स्टेट बोर्ड, आई मीन जो फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट जो मिनिस्ट्री है, वो ये मान के बैठे हुए हैं कि फीमेल क्या नेशनल पार्क को मैनेज करेंगी, मेल करेंगे. तो जूनियर मेल विल बी पुट इनटू द नेशनल पार्क एज अ डीएफओ, राइट, या डीसीएफ. लेकिन उससे सीनियर अगर फीमेल है तो उनको नहीं देंगे. उनको बोलेंगे नहीं, आप जो है ना, आप सिटी में देख लो, आप छोटे मोटे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लो, बड़े बड़े जैसे रणथंबोर हो गया या जिम कॉर्बेट हो गया, यू विल हार्डली फाइंड, आप देख लेना, आप हार्डली फाइंड एनी फीमेल डीएफओ और फीमेल फॉरेस्ट ऑफिशियल आउट देयर, राइट. दैट इज आई मीन, अब एक तरफ आप बात करोगे किस चीज की, वीमेन एम्पावरमेंट की, एंड यू विल क्रिएट सच काइंड ऑफ डिस्पैरिटी ओवर देयर. तो कहां से होगा? एंड ऑब्वियसली, आई मीन, इफ यू लुक एट द एंटायर सीन इन अ वेरी न्यूट्रल वे, तो आज के डेट में तो आई मीन अ फीमेल एज विल बिकम अराउंड 26, 28, 30 बाय द टाइम शी इज एस्टैब्लिश इन अ जॉब, be it private or government. Private हो या government हो, by the age of 30 you need to work very hard. चलो किसी का जॉब अगर मान लो 25 में लग जाता है, तो प्राइवेट में भी 5 साल बहुत काम करने पड़ते हैं to cement your position in the company, to reach to a level where you are secure. Even in a government sector also, if you want to rise the ladder of promotion and everything, the first 5 years is very important. You create an impression of good officer or bad officer. अभी आप क्लासरूम में बैठे तो आपको लगता है बस वहां पहुंच जाए, बात खत्म. वहां पहुंचने के बाद लगेगा कि आप पहुंच गए, आप यहां से वहां पहुंचना है. इन आईपीएस एंड आईएएस ऑफिसर्स आल्सो देयर इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ कंपटीशन. हु गेट विच काइंड ऑफ पोस्टिंग, हु इज देयर इन सेक्रेटेरिएट में कोई पहुंचा बोलता है बेचारा तो उधर सेंटिंग पोस्ट में है ना. एंड फॉर दैट यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू प्रूव. दैट इज व्हाई इन इंडिया देयर इज अ वन ट्रेंड, एंड दैट इज अ बेसिकली गुड ट्रेंड, दैट फीमेल इज फ्रीजिंग एंड प्रिजर्विंग हर एग. 28 से पहले एग को फ्रीज करवा देती है, बिकॉज इट्स ऑलरेडी प्रूवन बायोलॉजिकली दैट आफ्टर 30 इफ द फीमेल इज गेटिंग प्रेग्नेंट, सो चांसेस ऑफ जेनेटिक एरर इन द बेबी विल बी हायर. यू गेट माय पॉइंट? बिकॉज एग विल डिटोरिएट विद द एज. दैट इज व्हाई इफ यू लुक इनटू द सोसाइटी, इफ द बेबी इज बोर्न फिजिकली और मेंटली आई मीन challenged, then you will find that baby is born out of the mother and her age is around 35, 40. उस एज में ज्यादा चांसेस हो जाते हैं. ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शन नहीं है, but chances are always high. That is why even gynecologist, if you go over there, so the moment she get to know that female is 30 plus or 35 plus, she become extra cautious. आपको बहुत टेस्ट करवाएंगी, बहुत सारा सप्लीमेंट और ये और वो. So the best way is that freeze before time and use that frozen egg and then get pregnant. तो वो एरर आने के चांसेस कम हो जाएंगे. So these people, I mean this Shahrukh Khan, Amir Khan, these all,
Why they went into surrogacy? Because they don't want to use their own body. Simple एक था कि अपना बॉडी क्यों लगाना है. Why to get all the discomfort of pregnancy? Pregnancy can do anybody. That can be taken care of by anybody else. अब सोचो शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान, she can get pregnant at that time, but she was busy in developing a property in Goa. गोवा में एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है प्लैनेट बॉलीवुड. उसका इंटीरियर और उसका सारा कुछ उन्होंने डेवलप किया है, तो उसमें बिजी थी. बेबी सरोगेट से करवा लिया. चलो मान लो कि दैट इज देयर. आमिर खान की वाइफ, किरण राव, अब तो एक्स वाइफ है, बट किरण राव was quite young and she can hold a pregnancy very well, but she was busy in producing a movie, धोबी घाट. देखा है मूवी धोबी घाट? देखना भी मत, सर में दर्द हो जाएगा. आमिर खान है उसमें, बट इवन आमिर खान कुड नॉट सेव द मूवी. तो प्रोड्यूसिंग अ बैड फिल्म इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रोड्यूसिंग अ बेबी. यू आर बेसिकली सेटिंग सच एग्जाम्पल, राइट, कि एक बढ़िया फ्लॉप पिक्चर प्रोड्यूस करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन बेबी प्रोड्यूस करना सेकेंडरी काम हो गया. तो नाउ दीज आर द पीपल हु हैव मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स. बट आप सोचो ना, इनको देख के कितने लोग इंस्पायर हुए होंगे. पीपल लाइक करण जौहर टुक एडवांटेज ऑफ दिस. तुषार कपूर को भी एडवांटेज मिला. हाँ, तुषार कपूर, अब तुषार कपूर ठीक है, शादी तो नहीं हुई ना उसकी, अब तो इसमें अलाउड नहीं है. और तुषार कपूर की शादी हो भी कैसे सकती है? सोचो, यू नीड टू हैव अ गुड करियर फॉर मैरिज, राइट. 4 साल में एक पिक्चर उसमें भी बोल नहीं पाता है बेचारा, तो हु विल मैरी द गाय, है ना. लड़कों पे बहुत प्रेशर है अभी, तो आप सब समझ लो. खैर, सो ओके, यू कैन राइट वन मोर पॉइंट, इसके आगे लिखो. नेक्स्ट पॉइंट. तो फिर उसको इंडियन सिटीजनशिप के अप्लाई करे वो, फिर है ना. तो फॉर दैट यू हैव टू गो विद दैट. हाँ जी. अगर एक चाहिए तो फीमेल से, और अगर स्पर्म चाहिए तो मेल से. एनीवे, यू कैन राइट टू रेगुलेट एंड कंट्रोल सरोगेसी इन इंडिया. नेक्स्ट पॉइंट यू कैन राइट टू रेगुलेट and control surrogacy in India. To regulate and control surrogacy in India, National and State Surrogacy Board will be established, has been established. National and State Surrogacy Board has been established. National and State Surrogacy Board has been established, right. In case of any breach, of law, punishment up to 10 years, and penalty up to 10 lakh. And penalty is up to 10 lakh, right. एक आध इशू भी है इसमें. एक तो बड़ा इशू है कि सिंगल मेल हैज नो राइट, एंड दैट इज क्रिएटिंग अनदर. सो यू कैन राइट वन पॉइंट इशूज. सो इशू नंबर वन इज दैट इनफर्टाइल कपल हैज लेफ्ट विद वेरी लिमिटेड चॉइस, ऑलमोस्ट नो चॉइस. इंडियन सोसाइटी में तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता. सो फर्स्ट इशू यू कैन राइट इनफर्टाइल कपल are left with very limited choice. बट इससे एक फायदा हो गया ना, इंडिया में जो एडॉप्शन रेट कम हो गया था सरोगेसी के चलते, वो क्या होगा, रिवाइव हो जाएगा. बिकॉज इफ द कपल इज इनफर्टाइल एंड सरोगेसी इतनी इजीली मिलेगी नहीं, अब फैमिली मेंबर कोई रेडी होगा नहीं. हो गया तो वेल एंड गुड, और नहीं हुआ तो if they want to get a baby, then the other option is what? Adoption. ठीक है. Second you can write
single female such as widow and divorcee has surrogacy right, but single male of same category don't have surrogacy rights, right? That is another one. And the biggest issue now people are raising, अभी देखो इंडियन कोर्ट में एक पूरा सिस्टम चल रहा है. पहले होमोसेक्सुअलिटी डिक्रिमिनलाइज हुआ, फिर अभी उसके ऊपर अभी देखा आपने, अभी जस्ट फ्यू वीक अगो ओनली देयर वाज सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन वर्डिक्ट, और वो था कि सेम सेक्स मैरिज के ऊपर. एंड सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल एक बात कही कि आवर सोसाइटी इज नॉट येट रेडी, सो विल लुक आफ्टर सम टाइम. इसका मतलब ये भी है कि लेटर और सूनर दैट विल बी अलाउड, बिकॉज द मोमेंट यू डिक्रिमिनलाइज होमोसेक्सुअलिटी, क्या वो क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? यू हैव टू अलाउ दिस सेम सेक्स मैरिज. सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल कहा कि सोसाइटी इज नॉट येट रेडी, दैट इज वाई वी आर नॉट अलाउइंग इट. तो वो हो जाएगा. चलो, तो वहां पे कंट्रोवर्सी और आएगी. तब दे विल आल्सो गो फॉर सरोगेसी, दे विल आल्सो डिमांड इट बिकॉज दे हैव द ओनली वे सरोगेसी टू गेट इट डन. फिर वहां पे वो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, ये क्लोज रिलेटिव एंड ऑल कहां से लाएंगे. बट द बिगेस्ट इशू राइट नाउ इज ट्रांसजेंडर्स. यू नो, एट वन एंड ट्रांसजेंडर्स को हमने मेन स्ट्रीम में ला दिया है, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग, राइट? ट्रांसजेंडर्स आर ट्रांसजेंडर्स, उनमें उनकी तो कोई गलती नहीं है. दे आर ह्यूमन बीइंग विद 100% ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन कॉन्शियस, ह्यूमन इमोशन, एंड वी हैव बीन डूइंग रॉन्ग विद देम दैट वी नेवर अलाउड देम टू कम इनटू द मेनस्ट्रीम. और सिर्फ एक दिक्कत से कि हम कॉलम में मेल फीमेल ही लिखते थे और दूसरा तीसरा ऑप्शन देते ही नहीं थे. तो कई बार होता है ना कि यू डोंट एक्चुअली से दैट यू आर डिबार्ड, बट यू क्रिएट अ कंडीशन वेयर द ग्रुप ऑफ दोज पीपल विल बी डिबार्ड ओनली. अब फॉर्म में मेल और फीमेल लिखा हुआ है, तो वो क्या भरेंगे? यू गेट माय पॉइंट? सो द मोमेंट यू पुट मेल फीमेल अदर्स, तो देख लो आप, विद इन 10 years दे आर जज, they are lecturer, they are police officer, right? They are in mainstream now. So once they are in mainstream, so they will have a job, they will have a business, they will earn money, they will build their own house, they will have car, they will have properties. And the moment you have all these things, then there will be one inherent human tendency will surface that who will inherit it. है कि नहीं? हम सबके पेरेंट्स वही कहते हैं आज के डेट में कि जो मेरा है वो किसका है? तुम्हारा ही तो है. And that is what you will also think at some point of time, because that is the thing which is going on. It's a human tendency. It's biologically ingrained in us. Okay, whatever we have accumulated, that will pass on to the next generation, and we accumulate for that only. Right? तो वो तो आएगा ना उनके अंदर. So they will demand it. And let's say for transgender, there is no other way. Surrogacy is the only way. But in this entire act, rights of transgenders were not discussed at all. So now these people are basically raising this issue also, that homosexuality and transgender, that right should also be raised into this thing. But abhi kuch hai hi nahi. So you can write one more point. This act does not discuss about transgenders' right. This act does not discuss about transgenders' right, where surrogacy is only option. Surrogacy is only option. Surrogacy is only option. है ना? तो ट्रांसजेंडर वो अडॉप्ट भी नहीं कर सकते. वो अडॉप्ट भी कैसे करते हैं पता है ना? भाई के या बहन के बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं. वो भी इट्स नॉट अ काइंड ऑफ लीगल अडॉप्शन काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि अडॉप्शन इज ऑल्सो, इट्स द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ अडॉप्शन इज वेरी स्ट्रिंजेंट. अगर कोई बच्चा अडॉप्ट करना है ना, तो पूरी टीम आती है, घर देखती है, मेडिकल रिकॉर्ड चेक करती है, क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करती है, इनकम लेवल चेक करती है कि वेदर द पेरेंट आर फिट टू बी पेरेंट और नॉट. है ना? अगर कोई क्रिमिनल हो और कपल क्रिमिनल हो दोनों, तो बायोलॉजिकल बच्चे उनके हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एडॉप्शन वो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आप कहीं से बच्चा ले रहे हो,
So you might not get connected to that emotionally. There may be misuse, right? Even if the people are having no criminal record, income is low, so adoption will be, I mean, फिर तो गवर्नमेंट ये सोचती है कि फिर तो वो ऑर्फनेज में ठीक है, बिकॉज हियर वी आर एबल टू प्रोड्यूस, आई मीन गिव all the benefit to the kid. अब whether that is another way that whether we are able to provide it or not, but on paper तो है ही. So that is the issue that you keep in mind. हाँ जी. हाँ तो वही तो मैंने कहा, प्रोग्रेशन तो उसी तरह से होगा ना, बिकॉज दे आर फाइटिंग एट द डिफरेंट फ्रंट. एट द फर्स्ट फेज दे आर फाइटिंग फॉर द मैरिज एंड सून आफ्टर दैट दे विल गो फॉर द सरोगेसी. हाँ जी. क्योंकि मेल ऐसा मान के चलते हैं ना कि मेल विल नॉट बी एबल टू हैंडल द न्यू बॉर्न, राइट. और उसमें अभी बताया ना कि डिवोर्स के केस में 5 साल से छोटे बच्चे का कस्टडी किसको जाता है? फीमेल को, मदर को जाएगा, अगर मदर फिजिकली और मेंटली फिट है तो. अगर मदर फिजिकली मेंटली फिट नहीं है, शी इज इन क्रिमिनल एक्टिविटी, शी इज हैविंग सम काइंड ऑफ मतलब अगर वो फीमेल किसी तरीके से ठीक है तो वो ऑटोमेटिकली उसके पास जाएगा. हाँ, देयर आर कंडीशन वेयर द फीमेल विल बी डिनाइड टू, क्योंकि फीमेल अगर मान लो कि शी इज हैविंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, मेंटल, फिजिकल, बिहेवियरल, आई मीन बाइपोलर डिसऑर्डर है, सिजोफ्रेनिया है, देयर इज अ काइंड ऑफ एडिक्शन ऑफ सम ड्रग्स एंड ऑल, तो फिर जाएगा. आप क्या कर सकते हैं? हाँ जी. कौन सा? आई मीन दैट कैन ऑल्सो बी देयर. दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू. इसलिए तो अब ये ना क्लास में सब कुछ बोल नहीं सकते ना, फिर यहाँ पे हाँ बोलना तो पड़ेगा. तो इसलिए तो मैं तो क्लास में बोल देता हूं कि मतलब कहते हैं ना कि हिंदी में कहते हैं नारी की सबसे बड़ी दुश्मन नारी, पुरुष बाद में दुश्मन बनता है. इफ यू लुक इनटू द एंटायर सिनेरियो यू विल फाइंड इट कि सबसे पहला एक्सप्लॉयटेशन फीमेल का मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में दैट इज डन बाय द फीमेल, है कि नहीं? तो इसके पीछे रीजन है ना, मतलब बहुत सारे रीजन है. नाउ वी वोंट गेट टू द सोशियोलॉजी ऑफ इट, वो आप पढ़ लेना. मेल करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन एक और प्रॉब्लम है कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फीमेल स्टार्ट इन द फैमिली, राइट. और एक्सप्लॉयटेशन इज नॉट इन जस्ट वन वे, एवरी वे, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे वो नॉर्मली बिहेवियरल हो, रिलेशनशिप में हो, किसी भी तरीके का. तो दैट इज हाउ द थिंग्स गो ऑन.